टॉपिक जो है दिस इज अबाउट व्हाट लाई अहेड इन 2023। तो अगर हम इसका रेलिवेंस देखते हैं तो दिस टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर मेंस जनरल स्टडी, द पार्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेन पॉइंट है कि इंडिया के लिए इस आने वाले साल में सबसे पहला पॉइंट है कि दिक्कतें क्या हैं, ठीक है, और उन रोड ब्लॉक्स को हैंडल करने के लिए इंडिया के पास किस तरह के चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस में इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। सो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। You might be reading current affair from the last many months, and you are going through the various topics that you are part and parcel of your current affair. So there are two prominent challenges that India has seen in the recent time. One is the Russia and Ukraine war, and another one is the pandemic that started in 2020. No doubt it's subsidized, but after the pandemic subsidized, the another challenges comes, and what is that challenges? The economic restructuring of the country, the economical changes, because of the pandemic, almost every country has seen the downfall in the economic growth. Every country has gone down in the GDP. So the case was in the India also. No doubt India's economy is rising now these days as compared to other European nation countries, but still there are many challenges that India still need to bother about. तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर हम इसका रेलिवेंस देखते हैं तो हमारे पास जो चैलेंजेस हैं और जो अपॉर्चुनिटी हैं, दिस इज ऑन द फ्रंट ऑफ डिप्लोमेटिक एज वेल एज मिलिट्री फ्रंट। डिप्लोमेटिक हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज की डेट में? द वे वी आर हैविंग रिलेशन विद रशिया एज द वॉर इज गोइंग ऑन, and because we have a very long and established friendship with Russia, and because of that reason we are somewhere not opposing the Russian, and we are not indirectly or directly in any way coming into this particular conflict zone. Halaki we are saying कि भाई war is not a solution of anything. The Russia and Ukraine both should come to the table and talk and find a diplomatic answer. But the West see it's another point, because West see that India should completely abandon Russia as the most of the European has done, but we have not done. Because we clearly said that now we are going to see that what challenges are for us and we will handle by our own way. Second thing is the military front. Now what is the major challenge for the India in the military front? China. Because China is very assertive. It was assertive, it is assertive. And the way China is making an interference in the northeast, that is the Arunachal Pradesh and Ladakh region. So these are the major point of here. Now, COVID-19, no doubt COVID-19, the pandemic has subsidized, but in the recent time, we have seen that the in China, we have seen that the COVID is again has made a very bigger jump, and China has left its zero COVID policy, and China is getting opening. So in this context, if any new variant emerge, or definitely the pandemic is not over, WHO still saying that there is still a cause of concern for if new variant came out. So then definitely it will have some economic repercussions. So now when the China economy, China is saying भाई ठीक है, हमारी वो पहले पॉलिसी गलत थी कि भाई वायरस जो है वो हम बिल्कुल जीरो वायरस कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। पूरे वर्ल्ड ने भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, भाई वायरस है तो इसके साथ ही रहना होगा, है ना। तो चाइना ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब जब चाइना की इकोनॉमी ओपन होगी, चाइना इकोनॉमी विल ओपन, तो जब चाइना की इकोनॉमी ओपन होगी तो इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एक एज है वो किस तरह से अफेक्ट करेगा, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब 2023 के पास सबसे पहले देयर आर 6 हार्ड रियलिटीज। वो हार्ड रियलिटी हमारे पास कौन कौन सी है? नंबर 1 इज रशिया एंड यूक्रेन वॉर। नो डाउट इट्स अ वेरी difficult situations here because of this war, the world order that was somewhere going comfortably going on, trade was going and everything was peaceful. The moment this war started, the world order become unstable now, and that effect we are clearly seen in Europe particularly, because in Europe we see that recession is going on,
and it might affect the another countries also very soon if we see in 2023. Second reason is because of this war, there is a two kind of insecurity. One is the food security. Because of this war, various supply chain has been disrupted. Various countries who are dependent on the food grain import, they are now getting affected. And second reason, what is the energy crisis? If we see Europe, almost Europe take its natural gas and various states that depended on the Russia here, but now they have boycotted the Russia. So how this energy crisis will unfold? And now Indian context, now we are buying oil from Russia. No doubt we are getting cheaper also. It was a very assertive decision by the Indian government, because we will see where our interest lies. Why should we follow the policy of America? Why we should follow the policy of Europe? Because when you feel the challenge, जब आपको challenge लगता है तो तब आप बोलते हो भी आजो आजो. जब हम challenge face करते हैं on terrorism front and all चीजें, तो तब आप कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा patience रखिए. तो we have to learn कि every Europe problem could not be an Indian problem, or every Asian problem could not be overlooked because it's not a European or American problem. So that was very clear cut. So this is the another point, that the energy crisis that India is facing or could face because of these particular reasons there. Because if any somehow we are not able to take oil from Russia, definitely there would be a bigger challenge on the energy security. And in some point, वैसे तो it's not possible the use of the nuclear war in these days, but everything is possible also. The war is war. It can go to any end. So if there is a use of any nuclear warhead, no doubt on a very small scale, it will have a very devastating effect. And definitely that will be one of the bigger challenge also. Another thing is the way in this war, China and Russia has come closer. Their friendship has grown. And this is another strategic challenge for India also. Because India needs Russia for its various requirements, particularly for the defense requirement. And if China goes close to Russia, so somewhere it can influence the relationship in the defense and the technology field. ठीक है, तो अगर रशिया और चाइना एक होंगे तो नेचुरली है China will use its influence to subdue this relationship with India, Russia. So that is the first bottleneck. That is the 2023. Next is Chinese aggression. Chinese, that is again going very strong. They are recently we see in the Taiwan and Ladakh. That is another front here. In Taiwan, as the Nancy Pelosi paid a visit to Taiwan, and during her visit, China started a military exercise surrounding the water bodies of the Taiwan also. It was very close to even the security establishments and the military establishment of the Taiwan. Even the warning, jo siren the, they were also on there. It was looking where somewhere that they are going for the war also. So if China become more assertive over the Taiwan issue, it will be a major problem in the Asiatic region. And along with it, the China's entry into the Arunachal Pradesh, recently Taiwan, we see that they made a entry recently, and Ladakh, there are things going on. Still, no doubt, things are under control, but still they pose a bigger challenge for. So China is still one of the bigger challenge for India. Third is testing ties with West. No doubt, we are having a close relationship with Russia at that time, but somewhere it may also make us isolate from the another world fraternity, particularly Europe and America also. So India is walking a very tight rope. Presently, we are saying that we having a relationship more than 70-year-old. That is true, and Russia was and is our all-weather friend also. So we are going to have a relationship with that. But in the long run, it will somewhere, if the Russia and Ukraine war, if goes into one of the worst phase, then definitely कहीं ना कहीं इंडिया के इफेक्ट तो पड़ेगा ना उसका. इंडिया को टाइट रोप उसका यूज तो करना पड़ेगा ना, कि किस तरह से बैलेंस करता है रशिया के साथ रिलेशनशिप और वेस्ट. और क्योंकि आज की डेट में हमारा दोनों के साथ इक्वल रिलेशन है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि इफ वी आर फाइन वी आर गोइंग विद रशिया को हमें चीप ऑयल मिल रहा है.
आज की डेट में वी आर हैविंग इक्वल रिलेशनशिप विद यूरोप आल्सो, इक्वल रिलेशनशिप विद अमेरिका आल्सो. सो समवेयर इस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है, दैट विल बी द चैलेंज आल्सो. तालिबान. Recently, India reopened its embassies in Kabul, which is a clear-cut signal that somewhere the Taliban that has control of Afghanistan, and it has been somewhere recognized a kind of political entity, a kind of the politically we have recognized the rule of the Taliban there, and it is not in various countries are doing also. Whether it's China, whether it's even America, somewhere understanding is going on. No doubt we open the embassy, but we are very clear about thinking that if there is any event of extremism, terrorism, the women right, the human right violation will go on, then India will not tolerate it easily. That we have clear cut say. But again, even if we talk about the political front, to deal with the Taliban is not easy affair. So how India deal with the Taliban? Because Afghanistan, no doubt, we have made a lot of investment in Afghanistan. Almost the whole road infrastructure has been made by India. Their parliament building has been made by India. Many hospital buildings has been made by. So we have put a lot of investment because somewhere it is a part of our Central Asian route also. So India cannot simply ignore. Now Taliban is in the control. That is a one fact. So if India is not accepting Taliban and Afghanistan rule, it means we are leaving our whole investment, each and everything there. But again, to deal with Taliban is the main challenge. The fifth is Pakistan, an all-weather friend. Okay? That is always going on there. Recently, we see that the 2-3 major events happen. Imran Khan government has been removed. So another coalition party government came there. The army journal has been changed now. And we know it very well that the Pakistan army, they have a great influence over the civilian politics as well as the whatever the major foreign policy. And in the context of Indian policy, what are major decisions are taken, it is taken by the army chief there. So now the new, after Javed Bajwa, new army chief has joined it. So in these circumstances, how India's relation will go with Pakistan, because from the last many years, we have no relationship and bilateral any talk with Pakistan, but still he is our immediate neighbor, and it one of the major concern also. So how India deal with the new government and the new army establishment, that is another challenge also. After that, the crisis in neighborhood that you know about Sri Lanka. In Sri Lanka, it has gone through major economic downfall. The country is almost we have seen that they are even fighting for the basic thing, even the food and all the necessity. And India being a big brother, we have supported them by economic aid, by medical aid, by food aid, whatever they demanded, we get them. Even if they are getting a help from IMF, here again India played a very constructive and important role so that Sri Lanka's economy can come onto the feet there. But Sri Lanka is, if you look at the strategic position of Sri Lanka, being the part of this Indian Ocean, so which is the main route to the South Sea China Sea and one of the major shipping clan. And that is why China is also using Sri Lanka as its port basis. China also want to use this opportunity, want to establish the ports there, want to establish there some naval establishment there. So that is another things that we can see. If you are living in such a neighborhood and your neighbors are not stable, political instability is there, definitely it is a more cause of concern for a major country like India there. We are bordered by Pakistan, where we see some kind of political instability. Again, Sri Lanka, there is again political instability. Myanmar, again, there is a military dictatorship is going on. Nepal is another issue because now the government has changed also there. The new prime minister has come. So there are some concern always remain there. So these are the major things that you are going to see in Sri Lanka, that how China make its presence felt there and how India cope up with this thing. These are the major 6 things that 2023 are the bottleneck we can see that India will face in future here. Okay? So
now we will see that how the India will challenge these particular will handle the challenges and how it will find the opportunity here. So there are challenges and opportunities. So first part was the major problems that India is going to face. Now we will talk about the challenges and what are the opportunities that will come with those challenges also. So first of all, we will see this. The major thing is dealing with China. President Xi Jinping, he is more authoritative in China nowadays. He has the command over each and every aspect of the Communist Party of India. Recently, there is one body, this is known as the China Military Commission, which is one of the bigger body over the defense part. It comprises 7 members and 7 are the journals there. Out of those 7 journals, 4 journal has been taken who has a very strong experience in the ground-based warfare and all these kind of things, and particularly technology. Now, China is saying that by 2027, 2027 tak, China will have a good world-class army where it can handle any kind of challenge and any kind of threat, even if it's from the America also. That is what the China is focusing over, to get a world-class army by the year 2027. For this reason, China is investing a huge money in technology-enabled defense services. It is investing huge in technology. And if we look at the India side, in present time, earlier time, we see that we were somewhere not clear that whether China is our adversary or not. We were somewhere seeing it like that China will not do this, China will not do that. But at least now, India is very much clear that China is one of our adversary. The way it attack in the Ladakh front, the way it involved in the Arunachal Pradesh. So in future, China is, this assertiveness has to be challenged there. So how we can challenge this assertiveness? By making more investment in our defense and defense-enabled services there. Whether it's a manpower, whether it's a technology, whether it's a warplane, and whether it's the naval force. That we have to cover it up so that if anything happen with the China front, our army should be able to handle it very well there. That is the one challenge where we need to make our defense more modern and well organized as compared to China also. Second thing, engaging with Russia. No doubt, as I have told earlier also, that Russia is our all-weather friends. And the India-Russia friendship is going on from the 1960 time also. We have taken food, technology, defense, and each and everything we have taken from the Russia also. But in the present time, the China's increasing closeness to Moscow is Delhi's one of the biggest reason. Now, China is Russia's biggest trading partner. And if I talk about the Asian front, it is the largest Asian investor in Russia also. Another point is the way the West dealing with Russia. West ने क्या किया? कहता अब तुमको खत्म कर देना. ठीक है? We will not have trade with you. मैकडॉनल्ड तक बंद हो गए, वहां पे कोई बर्गर नहीं मिलेगा वहां पे. ठीक है? पहले मैं लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जहां पे 2 मैकडॉनल्ड होंगे वहां पे वॉर नहीं होगी, वो भी गलत साबित होगी. तो थ्योरी कीप ऑन चेंजिंग. तो वो मैकडॉनल्ड भी बंद हो गए वहां पे. अब ट्रेड तो करना है. इफ सम मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग ऑन समवेयर को, तो मैं तो कहीं तो बेचूंगा. तो रशिया कहता कोई बात नहीं, यू सेल टू मी. चाइना कहता मुझे बेचो, मैं आगे किसी ना किसी रंग रूप में आगे बेच दूंगा. तो थिंग इज गोइंग ऑन. तो अब इन चीजों का हम यहाँ पे देखेंगे कि रशिया के साथ जब हम एंगेज्ड होते हैं इन पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ, तो वी हैव टू चेक इट आउट अलोंग विद इट कि कहीं हम वेस्ट से आइसोलेट ना हो जाए. अब अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, सपोज जो कि समय सिनेरियो है, पूरे का पूरा यूरोप अमेरिका एक तरफ है. अब अगर हम इसकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं तो डेफिनेटली रशिया हमसे दूर होगा. रशिया हमसे दूर होगा तो किसके क्लोज जाएगा? चाइना के क्लोज जाएगा. अब जब रशिया और चाइना क्लोज होंगे तो उसका इमीडिएट नुकसान किसको होगा? वो इंडिया को होगा. अब दूसरी तरफ क्या होगा कि इफ वी आर गोइंग मूविंग टुवर्ड द फ्रंट ऑफ रशिया,
आज हम अगर रशिया की तरफ पूरा टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है, अभी तो हम एब्सेंट हो जाते हैं जी, पता नहीं जी, आप देखो क्या करना है, हम तो वोट ही नहीं करेंगे, ना हम हाँ में आएंगे ना हम ना में आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं रशिया की तरफ, तो वी विल कीप अलूफ, जितनी की पूरी ये बॉडीज हैं जो यूरोप है या अमेरिका है, उससे हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो ये एक बिगर चैलेंज है कि रशिया को हम किस तरह से डील करते हैं। लेकिन इस चैलेंज में हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिली? इसने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया को दी, एंड दैट इज व्हाई नाउ द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट इज कॉलिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर के भाई नेगोशिएट करो, कि आप नेगोशिएट करो और इस वॉर को बंद कराओ। सिमिलरली इंडिया इज एंगेजिंग विद रशिया आल्सो। आज की डेट में अगर रशिया और अमेरिका के, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर जारी, तो उसमें एक बिगर नेगोशिएटर कौन है? इंडिया। सो अगर इस चैलेंज में इंडिया समवेयर बिकम सक्सेसफुल इन बिकमिंग द बोथ पार्टी टू कॉमन टेबल, और ये वॉर सीज फायर भी हो जाता है, इवन इफ देयर इज ए सीज फायर, हाउ ग्रेट विल बी अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री एंड अचीवमेंट फॉर इंडिया? It will be a bigger victory for India, and India will emerge as one of the leading country in the diplomatic channel and the global level. So that is how it's challenge for India to engage with Russia, but along with it, somewhere it gives the opportunity of India also to being a leader in the world affair. आज तक ऐसा हुआ कि दो कंट्री जो लड़ रहे हैं, जहां पे वेस्ट इन्वॉल्व है, तो वहां पे नेगोशिएशन का काम कोई थर्ड कंट्री कर रहा है डेवलपिंग कंट्री से? नहीं। लेकिन दिस टाइम इट इज गेटिंग, ठीक है। इसके बाद G20 summit is going on, ठीक है। In this summit what we are going to see, the India has taken a very leading voice there, चाहे क्लाइमेट इशू हो, चाहे इकोनॉमिक इशू हो, चाहे ह्यूमन राइट के इशू हो, चाहे टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज हो। नाउ दीज डेज इंडिया इज द लीडिंग वॉइस ऑफ द साउथ, एंड G20 की लीडरशिप है, इट इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू ब्रिंग द कॉमन इश्यूज, खास करके जो डेवलपिंग कंट्री के इश्यूज हैं, जो खास करके डेवलपिंग कंट्री के इशू हैं, उनको एक वर्ल्ड स्टेज लाने में इंडिया को यहाँ पे एक बिगर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे? आज की डेट में ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग कि भाई ग्लोबलाइजेशन हो भी रही है, नो डाउट, ठीक है। पोल्यूशन बहुत हो गया है, दैट इज आल्सो फैक्ट, ठीक है। इसको कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे करो? कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि भाई जो ग्रीन हाउस एमिशंस है उसको कम करो, फैक्ट्रियों का धुआं कम करो। तो फैक्ट्रियों का धुआं कम करने का तरीका क्या है? जहां तो फैक्ट्रियां क्लोज कर दो, ताले लगा दो, काम खत्म, है ना। अब अगर फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। अब फैक्ट्री चलेगी तो धुआं भी निकलेगा। जहां तो फिर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी दो कि जिससे कि ये कार्बन एमिशन जो है वो हम जीरो कर सकें। वो टेक्नोलॉजी किसके पास है? वेस्ट के पास है। यू गिव अस ए टेक्नोलॉजी, वी विल रिड्यूस द एमिशंस। नाउ दिस डे नो कंट्री इज विलिंग टू गिव द टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। गिव एंड टेक इज ऑलवेज देयर। So now the three major polluter, US, China, India, in the economic front, if we particularly see. So there is a need of technology exchange between the developing and the developed country, and that is what the India could do it here. So now if on the global front, if India becomes successful in bringing some of the major concern related to climate change here, along with the Ukraine and Russia war, and if become a somewhere the negotiating partner, then definitely it will give the one of the bigger diplomatic victory for the India also. That is a G20. It is a challenge also to show the leadership, and it is a opportunity also to show a bigger image of India at the world level. Fourth है winning over the West. Now West is, America is openly saying that it is not possible that we can immediately take away India from Russia. Their diplomats are openly saying now it will take a very long time.
long time to build up the trust, long time to build up the various parameter, then we can take away the Russia from India, will be taken away from Russia. That is a long way out. But in the meanwhile, if we are buying cheap oil from Russia, that is fine. Economically, it suits us. That is, you see that our oil prices are not rising from the last many months also. Otherwise, it was not possible. The oil prices could be shoot off, effect could be on inflation, and we see that in economy, we might be reading some other stats. But buying a cheap oil from Russia and a close relationship with West, it cannot continue for a very long way. Somewhere India has to show to the West and the Europe particularly that India is not supporting the Russian war in either way out. And that opportunity is in the context of the G20. In G20, by raising these kind of issues and as well as playing a negotiable person, the India can somewhere soothe the feeling of the West कि भाई ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से उनकी सुन रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि जो भी आंसर है वो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत डिप्लोमेटिक और इस चैनल से जो है इसको आगे लिया जाना चाहिए. अगर दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं तो व्हाट इज द सिचुएशन एट द होम आल्सो. पहली सिचुएशन क्या है? श्रीलंका. अभी पैसे की और जरूरत पड़ेगी, खाना पीना सब चीजों का काम चलना, इकोनॉमी अभी पूरा बैक ऑन द ट्रैक नहीं है. तो श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि श्रीलंका को किस तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि हाउ लॉन्ग एंड विट वे इंडिया सपोर्ट श्रीलंका आल्सो. सेकंड थिंग है मालदीव. मालदीव में सितंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं. अब यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी और उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगा, दैट विल बी अनदर चैलेंज एज वेल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कॉन्टेक्स्ट. बांग्लादेश 2023 में जो कि इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं, 2023 के अंदर बांग्लादेश जो है वो इलेक्शन मोड में चला जाएगा इस ईयर में, और 2024 में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं. तो यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट बनेगी और वो गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के साथ किस तरह का रिलेशनशिप बिल्डअप करेगी और किस तरह की चीजें आगे मूव ऑन होगी, दैट इज अनदर पॉइंट. नेपाल की बात करें तो रिसेंटली पुष्पा कमल प्रचंदा, ठीक है, ही रिसेंटली बिकम द नेपाल प्राइम मिनिस्टर. दिस इज वेयर समवेयर इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. व्हाई? बिकॉज ही बिलोंग टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की जो थी उसको बिलोंग करता था, एंड बीइंग ए मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी जो पुष्पा कमल प्रचंदा है, ही इज मोर प्रो टुवर्ड द चाइना एज कंपेयर टू इंडिया. तो चाइना की तरफ थोड़ा उसका झुकाव ज्यादा है. तो ये तीन चीजें जो रहेंगी, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे क्या नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने जा रही है और किस तरह से इंडिया के साथ उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन जो यहाँ पे वर्कआउट करेगा, दैट इज द वन पॉइंट दैट वी नीड टू सी द क्लोजर होम. एंड लास्ट इज अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी इलेक्शन 2023 में होने वाले हैं, एंड वी नो इट वेरी वेल. गवर्नमेंट वहां पे कोई भी आए, अल्टीमेट जहां तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है तो वहां पे किसकी चलती है, दैट इज द मिलिट्री की, आर्मी की वहां पे चलती है. तो अब वहां पे आर्मी चीफ भी चेंज हो गए हैं, इलेक्शन भी वहां पे होने वाले हैं. तो इस कंटेक्स्ट में और 2024 में इंडिया के इलेक्शन भी ड्यू आ जाते हैं. 2023 में पाकिस्तान और 2024 में इंडिया का इलेक्शन भी ड्यू है यहाँ पे. सो अब 2023 जो है अगर इस पूरी इंटायरिटी में देखो इंडिया रीजन में, ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि काफी ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल के ऊपर चेंजेस आने वाली हैं. इंडिया में भी 24 में गवर्नमेंट आएगी, नए इलेक्शन होके गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान में भी आएगी. तो ये मेजर चैलेंजेस जो है वो इंडिया के अंदर थे जो हमें यहाँ पे 2023 में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं. ठीक है, सो कंक्लूडिंग स्टांस हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है कि G20 समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को डिप्लोमेसी के मीडियम से यूज कर सकता है. तो पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली दिस कैन बी ए वन ऑफ द बिगर अपॉर्चुनिटी हियर. और यही से हमें देखना होगा कि इंडिया जो है इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करके अपने जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं उनको यहाँ पे हैंडल कर सकता है, बाय मेकिंग न्यू फ्रेंड्स
and keeping old one also. So this was the one small topic that is particularly for 2023. The main purpose of this topic was because you read newspaper, you read the current affair, and whenever you are reading, खास करके जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन इज ए वेरी डायनामिक फील्ड. It keep on changing with every passing days, in every small and major event. Now these days, it's not a bomb that shape the international relation and all this kind of thing. A simple tweet. A simple tweet has the power to change the political system of one country or the another. ठीक है. सो दैट इज हाउ कि जब आप इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं तो ये चीजें आपके माइंड में आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये मेजर कंसर्न है, खास करके क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हैं ना, इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री, ठीक है, तो नेबरिंग कंट्री के जब ये टॉपिक आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो तब आपको ये मेजर कंसर्न अगर पता होते हैं तो तब आप जो न्यूज़पेपर या एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट होता है उसको आप बेटर समझ सकते हैं. सो दैट वाज द मेन पॉइंट के ये टॉपिक हमने आपसे डिस्कस किया है. ठीक है जी, ओके जी. तो